Hello students, welcome to your SST class. So I'm here to teach you SST. In last chapters, we have learned many things about our country, India. So now today also we are going to learn something more about India and their resources. So I hope you all are very good. So let's start the chapter. So today's chapter is chapter 11, human resources. We are going to study in this the human resources step taken by Indian government to solve the problem of the people. Now let's start. India is very rich in natural resources, but people are not very rich. Many people cannot afford even two good meals. So many people do not have proper shelter. Every day we see especially children on the road who do not have proper clothes to wear. Countries like Japan and Singapore are not rich in natural resources, but the people are prosperous. Even within our countries, people in Punjab are more prosperous than those in Bihar. Punjab is not rich in minerals like Bihar. In India is a natural resources, a biggest country of natural resources, full of natural resources. बट जो यहाँ के लोग हैं बच्चे वो क्या है ज़्यादा रिसोर्सेज में रिच नहीं है वो बच्चे वो लोग ही क्या है ज़्यादा रिच नहीं है इंडिया के लोग और वो कोई कोई तो ऐसे हैं बच्चे जो दो वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मैनी पीपल वी ऑफ्टन सी मैनी पीपल ऑन रोड स्पेशली किड्स जो क्या करते हैं वहां पर बच्चों भीख मांगते रहते हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते हैं जैसे कंट्रीज है जापान सिंगापुर वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज में रिच नहीं है लेकिन जो उनके जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं उसी प्रकार जैसे कि हमारी कंट्री में जो लोग पंजाब में हैं वो बहुत ही वेल्दी होकर रहते हैं जैसे कि बिहार में नहीं रह पाते इतना जबकि जो बिहार है बच्चों वो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है वी कैन सी दीज किड्स हियर they don't have even a good clothes to wear, a good food to eat. However, resources alone are not enough. We need educated and skilled people to convert these natural resources into useful goods. Thus the people of a country are its greatest resources. If the people are hardworking and produce good quality goods, the country would be rich. On the other hand, if there is no enough work for the people or the quality of product is not good, most people will remain poor. हालांकि जो resources है वो अकेले ही enough नहीं है हमें क्या करना चाहिए एजुकेशन चाहिए ऐसे एजुकेटेड लोगों का साथ चाहिए स्किल्ड लोगों का साथ चाहिए जो कन्वर्ट कर सके नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में जो ऐसे लोग हमारी कंट्री में होंगे अगर तो क्या होगा नेचुरल रिसोर्सेज से हम अपने जो यूजफुल गुड्स है उसको बना पाएंगे हार्ड वर्किंग पीपल कैन प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ गुड और कंट्री अगर इस और फिर कंट्री क्या हो जाएगी बच्चों रिच हो जाएगी लेकिन अदर हैंड इफ वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ पीपल सो पीपल ऑन क्वालिटी अगर गुड क्वालिटी का वर्क नहीं होता है गुड क्वालिटी के गुड्स प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं तो पीपल क्या रह जाएंगे पीपल हमेशा यहाँ पर गरीब ही रहेंगे नेक्स्ट After independence, efforts have been made to develop our resources, meet our needs of the people. Progress has been made to agriculture and industrial production. New schools, colleges, and hospitals have been opened in different parts of the country. इंडिपेंडेंस के बाद बच्चों एफर्ट्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ steps to develop our resources, meet the needs to fulfill meets the needs of the people to fulfill their need. Progress has been made. एग्रीकल्चर में हमने सुधार किया है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में वी हैव डेवलप्ड आवरसेल्फ हमने स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बहुत सारी जगह पर अलग अलग जगह पर जो है ओपन किए हैं कंट्री ने गवर्नमेंट ने टू मेक आवर कंट्री स्ट्रॉन्गर एंड टू अवॉइड पॉवर्टी Development in fields have greatly improved the standard of living of the people, but still, about half of the people of the country are very poor. They do not get enough to eat.
One of the reason for such poverty is increasing population. Another reason is the unequal distribution of wealth. जो डेवलपमेंट है फील्ड्स में, बहुत सारी फील्ड्स में इंडिया ने, बहुत सारे हमारे देश ने डेवलप किया है, लेकिन फिर भी हाफ ऑफ द पार्ट क्या है हमारे इंडिया का, गरीब है। उनके पास इनफ अच्छा खाना तक नहीं है कि जिससे वो खाना अच्छे से खा करके न्यूट्रिशंस फूड ले सके। दे नॉट गेट इनफ फूड। उनमें से सबसे बड़ा एक रीजन है पॉवर्टी का इज पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, bursting population is a major reason of poverty in our country India. So another reason is unequal distribution of wealth. जब wealth का distribution unequal होता है तो गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, so there is a big difference between अमीर and गरीब. Okay, the next is at present time the population of India is 1.45 billion. India is the first most populous कंट्री इन द वर्ल्ड। अब प्रेजेंट टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन बच्चों बहुत इंक्रीज कर गई है। नाउ इंडिया इज इन फर्स्ट ग्रेड। सो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 1.45 बिलियन। इंडिया इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री। भारत जो है पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पर आ गया है पॉपुलेशन में। The distribution of population in India is also uneven. Some areas are thickly populated while some have few people living in them. The average density of population in India is 464 people per square kilometer. The world's average density is only 45 people per square kilometer. More than half of the total population live in 5 states: Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. Uttar Pradesh is the most populous state in India. Sikkim is the least populous state of India. जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का बच्चों, वो भी इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा अनइवन है। कहीं पर कुछ ही लोग रह रहे हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा लोग रहे हैं, बहुत भीड़ है, कहीं पर कुछ ही चंद लोग रहे हैं। जो पॉपुलेशन का जो रेट है इंडिया का वो क्या है 464 पीपल पर स्क्वायर मीटर एंड द वर्ल्ड्स एवरेज डेंसिटी। अब ओनली उसमें क्या है बच्चों 45 पीपल है पर स्क्वायर किलोमीटर पर। देखिए देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इट। So now, जो most of the population of India lives in state Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. So जो most population वाला state कौन सा है हमारा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है बच्चों। और सिक्किम क्या है बच्चों, सबसे कम यानी कि least population वाला state है। The increasing population creates many problems. There is shortage of food, water, houses, schools, colleges, hospitals and jobs. A large number of Indians are uneducated and unemployed. तो बच्चों जो हमारा पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग रेट है, जो हमारे पॉपुलेशन का, it creates many other problems related to poverty and backwardness. तो पॉपुलेशन से क्या होता है बच्चों, शॉर्टेज हो जाती है फूड की, वाटर की शॉर्टेज, हाउस के शॉर्टेज, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जॉब्स, इन सब की शॉर्टेज हो जाती है पॉपुलेशन अब जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन क्या है, अनएजुकेटेड है अभी भी स्टिल, एंड अनएम्प्लॉयड भी है। ठीक है बच्चों। नाउ आउट ऑफ एवरी 4 इंडियंस 3 लिव्स इन अ विलेज। हर 4 जो अगर हम इंडियंस को लेते हैं तो उनमें से 3 कहाँ रहते हैं बच्चों, दे लिव इन विलेजेस। फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन ड्यू टू लैक ऑफ वर्क इन द मेन village and repeat crop failure. Many villagers come to the cities. These people are called migrants. These creates even greater problem as they do not find regular job in cities. Most of them work as daily wages. Tribal people live in different part of the country. The Gond, Bhil, Santhals, Minas, Orans, Mundas and Khunds are some tribal groups of India. जो हमारे 4 इंडियंस में से हमारे 3 इंडियंस कहाँ रहते हैं बच्चों, विलेजेस में रहते हैं। Their main occupation is
farming. They do farming for their living. But अगर वहाँ पर फार्मिंग एक सीजनल फार्मिंग होती है, in India there is a different kind of culture, different kind of monsoon, different kind of weather. So accordingly they farm their fields. But in some area, in some regions, the work is not permanent. So for those reasons, they go in cities, they migrate in cities, and in cities they do not get enough time, enough work, or enough salaries. They get on daily basis wages, which is not sometimes enough for them. Most of them are really they are working as daily wages. Tribal people lives in different part of the country. They are Goan, Bhil, Santals, Minas, Arons, Mundas, Kuros, and some tribal groups who are living in different part of our country. You can say, you can see in this picture, this is the picture of an Adivasi group, and here are the women carrying their kids with them. The government is taking the following steps to solve the problem of people. The many steps are taken by the government to solve these kind of problems. Let's have a look. Jobs are provided to the poor. Land and houses are being allotted to the poor. Health centers and hospitals are being opened in villages and towns. Banks gives easily loans. Bank gives easy loans to the people to encourage them to start their own businesses. Children from poor family are being educated. मतलब जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए उनमें से पहला क्या है, बच्चों उनको जॉब प्रोवाइड की जा रही है, दूसरा उनको लैंड हाउसेस अलॉट किए जा रहे हैं गरीब लोगों को ताकि वो अच्छे से रह सके. हेल्थ केयर सेंटर है, हॉस्पिटल्स है, वो ओपन किए जा रहे हैं विलेज एरिया में ताकि उनको अच्छी हेल्थ मिल सके. बैंक जो है इजीली जो लोन्स प्रोवाइड कर रहा है सो दैट वो अपना कुछ छोटा स्मॉल बिजनेस दे विल एबल टू स्टार्ट देयर स्मॉल बिजनेस. चिल्ड्रन पुअर फैमिली से अब एजुकेटेड हो पा रहे हैं. दे आर नाउ एबल टू टेक एजुकेशन, दे आर एबल टू गो स्कूल्स एंड ऑल. So these are the important actions taken by our Indian government. So healthcare center in village. You can see one lady is here. She is from a village and she is taking medicine from the healthcare center in village. So students, in this class, this much only, and we have learned a lot of things regarding human resources. We have learned what is human resources. We have learned how we can preserve human resources, how a human resources give its precious contribution in the growth of a country. So students, study hard. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.